This time, NCPCR Chief Priyank Kanoongo writes to the Chief Secretaries and administrators of all states and union territories regarding the Commission's report. Now, guardians of faith or oppressors of rights, constitutional rights of children versus madrasas. Now, the letter reads, and I will quote, "It has been recommended that a state funding to the madrasas and madrasa boards will be stopped across all the states and union territories, and the madrasa boards should be discontinued and closed down effective immediately." Now, it has also been recommended that all non-Muslim children be taken out of those madrasas and admitted in schools for receiving fundamental education as per the Right to Education Act of 2009. Now, also children from Muslim community who are also attending madrasas, whether recognized or unrecognized, are enrolled in formal schools and receive education of the prescribed time and curriculum as per the RTE Act 2009. So these are the latest inputs that we are tracking at this point of time. सर, एक पत्र आपने लिखा है स्टेट्स को, सेक्रेटरीज को, कि मदरसा बोर्ड को बंद किया जाए। क्यों ये लिखा गया है, क्या इसके पीछे आपकी कहानी? मदरसा बोर्ड जिस उद्देश्य के साथ बनाए गए थे उस पर्पस को सर्व करने में फेल हो गए हैं। देश में 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड हैं जो अपने पर्पस में डिफीट हो गए हैं। इन मदरसा बोर्डों से एफिलिएटेड मदरसों में लगभग सभी राज्यों में जहाँ ये बोर्ड हैं, हिंदू बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। इनका वाकई में बच्चों की शिक्षा से वास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही राइट टू एजुकेशन एक्ट के वायलेटेड मैनर में चलाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, किताबें नहीं हैं और ट्रेंड टीचर्स के अभाव में तो सब संभव ही नहीं है। हमने बहुत डिटेल अध्ययन किया है। ये आज भी मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के बामुश्किल 10% भाग को सर्व कर पा रहे हैं। असल में 1.25 करोड़ बच्चे उन मदरसों में हैं जिनका मदरसा बोर्ड से कोई वास्ता नहीं है। तो जो मदरसा बोर्ड अपने पर्पज़ में फेल हो गए हैं, आइडिया के साथ बनाए गए थे, उसको सर्व नहीं कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड या मदरसा को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग जो है वो शिक्षा का अधिकार कानून और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का के खिलाफ है। इसलिए हमने सरकारों को बोला है कि मदरसा बोर्ड्स अपने अपने बंद कर दीजिए। ये सुनिश्चित करिए कि बच्चे स्कूलों में पढ़ें और ये भी सुनिश्चित करिए कि जितने हिंदू बच्चे वहाँ पर हैं उन हिंदू बच्चों को मदरसों से तत्काल निकाल के स्कूलों में डाला जाए। Well, joining us on the broadcast is our colleague Ananya Pandey. A very good morning, Ananya. Well, Ananya, help us understand, with Priyank already requesting and vouching for shutting down the madrasas, what legal implications will this have? Well, evidently, the timing of this letter also seems to be at some perfect timing, because remember, the Supreme Court is currently dealing with the issue of the UP Madrasa Board Act, where in fact the UP government had said that madrasas are equivalent to a 10th class being imparted to the students, and no kind of a practical knowledge is being imparted, is what in fact UP government had gone on to say before in fact the Supreme Court. But here the NCPCR chief and the National Commission of Protection of Child Rights coming down heavily. And if you remember that the NCPCR had been carrying out a lot of inspections of various madrasas in the country, and that similar reports have come in from in fact various parts of the state where the students were being taught something else, or they were not being granted, imparted proper education, and hence, this letter has now been written, in fact, by the NCPCR chief to the chief secretary and the chief secretaries of the states and all the union territories regarding the commission's report, over, in fact, the right of children in madrasa. So very clearly at this particular point of time, how will the Supreme Court deal with it, how will, in fact, the state governments would be dealing with it, is something that we'll have to wait and watch for. Right, Ananya.